Is there a way one can grow more from the same land? मीन्स क्या उस बीमे से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle during the rainy season Kharif. Farmers grow jowar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, rabi fields are sown with wheat. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumptions and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. A part of the land area is also devoted to sugar cane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in Shahpur. The main reason why farmers are able to grow three different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. Electricity come early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheel was till then used by farmers to draw water from the well and irrigated small fields. People so that the electric run tube wells could irrigate much large areas of land more effectively. The first few tube wells are installed by the government soon. However, farmers started setting up private tube wells as a result. By mid 1970s, the entire cultivated areas of 200 hectares was irrigated. Not all villages in India have such high levels of irrigation apart from the riverine plains. Coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low levels of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. In these remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potatoes as the third crop in the past 15 to 25 years. The following tables 1.1 show the land under cultivation in India in units of million hectare. Plot this on the graph. Provide what does the graph show discuss in class. P provides provisional data shows Pocketbook of Agriculture Statistics 2020 Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. Is it important to increase is it important to increase the area under irrigation? Why? You have read about the crops grown in Palampur. Fill the following table based on information on the crops grown in your region. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming modern farming methods for higher yield. Yield is measured as crop produced on a given piece of land.
1960s, the seed used the seed used less irrigation. Farmers used cow dung and this water readily available with the farmers who did not have to buy them. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties H, HYVS of seeds compared to the traditional seeds. The HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. HYV seeds, farm machinery, diesel, irrigation, pesticides, or fertilizers, and HY seeds, canals, pump sets, electricity dams, high yields were possible only from a combination of HY seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. Farmers of Punjab, Haryana, and western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. The farmers in this region set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers, and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractor threshers which made ploughing and harvesting faster. They were rewarded in they were rewarded with high yields of wheat. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional of was 1,300 kilogram per hectare. With H5V seeds, the yield went up to 3,200 kg per hectare. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. Modern farming method required the farmer to start with more cash than before. Why? During your field visit, talk to some farmer of your region. Find out what kind of farming method, modern or traditional, or mixed do modern or traditional or mixed do the farmer use. Write a note. What are the sources of irrigation? How much of the cultivated land is irrigated? Very little.
nearly half, majority, all. From where do farmers obtain the input that they require? अब देखिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। मीन्स अगर हमारे पास एक ज़मीन है 1 बीघा की, तो हम उसमें उससे ज़्यादा जो है अ, फसल या आपके जो भी खेती है हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं उससे। वह यह करना चाह रहा है इस चैप्टर में। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। अब देखिए, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। इसमें यह नहीं बताया गया कि किस भूमि या कौन सी भूमि। उस भूमि मतलब कि पालमपुर की जो भूमि है। अब देखिए जैसे कि हमारे भारत की जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आ, तो इसलिए वो हमको इसमें कुछ बताना चाह रहा है कि गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसके वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर बिजली जल्दी पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 में के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। एक वर्ष में एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज भंडारण के सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। सारणी 1.1 में 10 लाख मिलियन हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करके आरेख क्या दिखाता है, कक्षा में चर्चा कीजिए। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक
खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 में दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को आधिकारिक उपज वाले बीज HIV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HIV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले ही अपेक्षा नहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी।